Professor Director, Academics and Principal, Mrs. Rajni Juneja, to formally welcome our Honorable Chief Guest, Dr. Agarwal, with a planned sampling. Retention, problem-solving skills, and adaptability in dynamic situations. These are life skills which are required for success in the real world we live in. The guidelines by NEP 2020, the new education policy being followed by our country, aims to make education engaging, relevant, and accessible, fostering critical thinkers and lifelong learners. I am glad to say that the practices of teaching and learning using these methods have been followed by our school to the students of our school, for each one of you. You are the reason we walk through these doors every day with purpose and passion. Your curiosity, energy, and resilience. You teach us patience, the value of new perspectives, and the power of hope for a brighter future. My heartfelt gratitude to all the staff members who have worked tirelessly to make today's event possible. A special mention must be made for our coordinators, Mrs. Vandana Unyal, Mrs. Amita Sharma, and Mrs. Samiksha Solanki. A great contribution has been made to today's event by the dance teachers, Ms. Bharti Suryan and Ms. Janvi Nath, by the senior faculty members, Mrs. Kalpana Unyal. Respected Chief Guest, esteemed members of the management, honorable teachers, dear parents and fellow students, good evening. I am Manas Singh Negi, and it is an immense honor and privilege to stand before you today as the head boy of Adroit Progressive School on the occasion of our 17th annual day. Looking back at my journey here, I am filled with gratitude and a deep sense of pride. Adroit is much more than just an educational institution to me. Over the past 9 years, it has been a place where my intellect has been shaped and my character has been molded. It is here that I have learned the true value of knowledge and the importance of staying authentic to oneself. Adroit doesn't merely teach us, it transforms us. As Ralph Waldo Emerson beautifully said, what lies behind us, what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. These words truly capture the spirit of Adroit. It is at Adroit that I uncovered the potential I never knew I had. The school has an exceptional ability to push each of us. Curricular activities play a vital role in helping students develop social skills and learn teamwork to achieve common goals. These activities provide children performing arts category. The Best Dancer of the Year award goes to Akriti Pratap. With the grace and energy at every event. Her consistent dedication is evident through her participation in various competitions, including the classical music has shown brightly this year. He not only led his house to victory in the inter-house music competition, but also represented the school at the Doon Girls Music of Spears competition. Next, in the fine art category, the Best Artist of the Year award goes to Ayush Agarwal. Ayush is a versatile artist who has left his mark both in our school and beyond. He represented our school at the Uttarakhand Spikmakai State Convention, and his artwork was even featured in the latest edition of Adroit Insider. He has proven himself to be an eloquent and confident orator, participating in numerous public speaking events over the past year. He also represented the school in the prestigious Doon Girls Hindi Debate Competition. He has displayed exceptional talent and determination in sport. His outstanding performances across multiple disciplines during sports days have earned him numerous medals, showcasing his versatility and excellence in every sport he participates in. The Sports Leadership Award goes to Aviraj Mewar. Aviraj has been an outstanding sports vice captain, showing not only leadership but also skills in various sports.
His dedication to the team and his ability to inspire his leadership in multiple roles, not only did she serve as the head girl for the academic session 2024-25, but she was also the first who has served as a head boy for the year 2024 and 25. And in that role, he has been a constant source of support and guidance for his peers. His quiet and yet impactful service really showed initiative in organizing and participating in school events. Her involvement in a wide range of activities, along with a proactive transfer. As a cultural captain for the year 2024-25, she has been a guiding force of this evening. As you are all aware that this evening's presentation is on Lord Krishna, what better way then to set the tone to the cultural presentation than to invoke Krishna's blessings of wisdom, joy and compassion, the Krishna Vandana. This beautiful invocation I invite you all to join us and welcome Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Devaki Nandan तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। लीला परम्पार तेरी तू मांग छोड़ कहावे, भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला, तेरी भक्ति में नाचे सबका ताकिया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तेरे चरणों को रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। तेरे चरणों को रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं
City of Mathura, a wicked king named Kans ruled with terror. To seize the throne, he imprisoned his own father and enslaved his people in fear. Although evil, he loved his sister Devaki and gets her married to Vasudeva. On the day of the wedding, a prophecy foretells that Devaki would give birth to the child destined to end the dominant reign of Kans. In his cruelty, Kans imprisons Devaki and Vasudeva and kills their children one by one. But on the night Devaki's eighth child is born, something miraculous happens. The prison gates open, the guards fall asleep, and a divine voice instructs Vasudeva to carry the baby to safety. Protected by the serpent deity Sheshnag, Vasudeva crosses the Yamuna river and places the baby in the care of Nand and Yashoda in the village of Gokul. The divine baby is Krishna, a true gift from the gods, the eighth incarnation of Lord Vishnu. लक्षणं कुटिलकुपन्थकामि क्रोधरूपकंसक्रूरतम् असभ्य अत्याचारिणीम् अशिष्टतम् अभद्रतम् दुरात्मा अनन्त दुःखदायि दुष्ट दुर्जनम्
शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से ले जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा।
लेके आ, हजार लेके आजा। कतार लेके आ, दरबार लेके आ, हजार लेके आजा, आजा। excitement
as they prepare offerings for Indra, the god of rain, believing his blessings bring them the rains they depend on. Krishna, observing this, questions why they should worship. Where young Krishna lives among cattle herders, butter is abundant and Krishna loves it. He will seize any chance to sneak a taste.
आज देखो देखो आया गोविंदा ग्वालों की भीड़ जमी आज देखो रे देखो आया गोविंदा परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास राधा कृष्णा राधा कृष्णा श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सा
है मोहन के मन में राधा कृष्णा राधा कृष्णा। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। Kans lives in fear of the prophecy that Krishna would bring about his downfall. He invites Krishna and Balaram to a grand wrestling competition in Mathura. He plans to kill Krishna with the help of his powerful wrestlers in the arena. Krishna knows this is a trap laid by Kans, but he decides that it's time to fulfill the prophecy. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज रंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। अजगर और बाज की सागर झंझार की झलकी अंगार से साहिल मझधार की बागी जल्लाद की। दोस्ती किसी और चलिए आने आएगी कैसी क्रांति, संग्राम या संगम की लहरें आएगी। पूरब पश्चिम मिलते हुए हैरत ये दोस्ती। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। प्रमुदिता सुभगा दर्शनीयांगी, वेदी मध्या मनोरमा।
अंग सुगंधित मन आनंदित अंग सुगंधित मन आनंदित चमोर बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ।
The sounds of battle fade into silence. The field remains still.